Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is AGRO-5321. So today I have come up with a very new chapter, which is a watershed management. Okay, so in this particular chapter we have discussed about the introduction, the basic introduction, the need and the size of watershed, then the problem, concept, objectives, principles, steps and factor affecting of watershed management. Okay, so in this lecture today we will dealing with the introduction, need, and the what is the watershed management, what is the size of watersheds, different watershed systems and their concepts also. Okay, so let us see the watershed, what is the watershed management. Okay, so yes, before we have understand the watershed management, we need to understand the difference between the watershed management and the water harvesting. Okay, because the very frequently question has been asked from the students, what is the difference between the watershed management and the water harvesting management. Okay, so I'll try to make very clear between two. Okay, when we talk about the watershed management, we can say the watershed management means to conserve soil and water in a watershed river basin. Okay, so as to increase the biomass production, we can say. Okay, so that would be a watershed management. Okay, and when we talk about the water harvesting, so water harvesting means what? The storing rainwater and reusing it rather than allowing it to run off. Okay, स्टोर करके रखना और रीयूज करना, रन ऑफ को रोकना, दैट वुड बी अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. ओके, बट इन watershed management includes both, okay, the land and the water area that run off the common point. मतलब लैंड से वाटर बॉडीज में अलग अलग तरीके से, अलग अलग बेसिन से, अलग अलग चैनल से वाटर क्या है कैचमेंट एरिया में कलेक्ट होना, और उस कलेक्टिव वाटर को कॉमन पॉइंट से हम क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं. दैट वुड बी अ वाटर शेड मैनेजमेंट, ऑलवेज रिमेंबर. ओके, बट इन वाटर हार्वेस्टिंग वी स्टोर द वाटर and use them for irrigation, drinking, cooking purpose and cultivation purpose, for electricity generation, all of them. Okay, then the watershed management system are very natural system. Okay, we have to manage that particular natural system, that would be a watershed management. Okay, but in water harvesting is what? The water harvesting system are artificially. Okay, artificially हम according to the land, according to the weather, according to the rainfall frequency, हम जब किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए, वाटर को कैचमेंट एरिया पे कलेक्ट करने के लिए, दैट वुड बी अ water harvesting system. Okay, so these are the basic differences between two, watershed and water harvesting system. Okay, so I hope you all understand the differences between watershed and water harvesting. Okay, so let us say the water harvesting, watershed management. So here is the image for watershed. Okay, so I believe the image is very suitable to understand very easily. So let us say watershed, and then you have a river basin. Suppose then you have a river basin. So when I say a watershed, it is a kind of a boundary that separates one water drainage basin with the another drainage basin, and thus this is a kind of watershed. ठीक है, अगर हम वाटरशेड में हम देखें कि जो रिवर बेसिन है, राइट, सो रिवर बेसिन का एक प्रॉपर बाउंड्री बना हुआ है, जहाँ से एक रिवर बेसिन से दूसरे रिवर बेसिन में किसी कलेक्टिव एरिया पे अगर वाटर जो है वो कलेक्ट होते हैं, दैट वुड बी अ वाटरशेड वी कैन से. ओके, सो नाउ विद दिस वाटरशेड what you have is you have a small river that are separated. ओके, मतलब छोटी छोटी नदियां हैं, हम कह सकते हैं छोटी छोटी नालियां हैं, छोटे छोटे चैनल्स हैं, दैट आर सेपरेटेड. ओके, सो
However, when I talk about the catchment area, usually a large area that we considered, so the catchment area, right? So when we talk about the bigger river, the area drained by the bigger river basin. Okay, when we talk about the small river, we usually focus with the watershed. ओके सो दैट इज द, अगर हम छोटी नदियों के बारे में बात करते हैं, दैट वुड बी अ रिवर बेसिन. एक बड़ी नदी है जो एक रिवर बेसिन, एक चैनल के थ्रू किसी लोकेशन पे आके पानी कलेक्ट हो रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मॉल रिवर बेसिन, वी कैन सी द वाटर शेड. ठीक है, एक ऐसा एरिया जहाँ से वाटर शेड चैनल के द्वारा जो है वाटर कलेक्ट हो रहा है. ओके, सो व्हेन यू हैव अ बाउंड्रीज दैट सेपरेट्स टू स्मॉल स्ट्रीम, दैट इज अगेन watershed management, we can say. Okay, so the very important, that is the river basin. You can see here, that is the river basin. ठीक है, जो डार्क ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, that is the river basin. That is the different channels, we can say. Okay, so the very important term is the perennial river and the ephemeral river. Okay, I hope you heard about that perennial rivers and ephemeral rivers. Okay, and what is the basic differences between two? Okay, क्या differences है इनके बीच में? जब भी हम watershed management के बारे में बात करते हैं तो perennial river and the ephemeral river की बात होती है. Okay, so when we talk about the perennial river, we can say the perennial river is those river which flows throughout the year. Mainly we use when you have the glacier mountain. Okay, so the glacier mountain, that would be a very good example of perennial river. Okay, but in ephemeral river, when we talk about the ephemeral river are very simple. Those river which are carrying water during the rainy season, but in the other season they turns out the dry area. Okay, so those are the ephemeral river. ठीक है, पेरिनियल रिवर में थ्रू आउट दी जब रिवर चलती रहती है, ठीक है, जो ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, इस तरीके के जो थ्रू आउट रिवर चैनल जो है, बेसिन जो है बने हुए हैं, दैट वुड बी अ पेरिनियल रिवर. ओके, बट ephemeral river इज व्हाट? द ephemeral river ऐसा चीज़ है जहाँ जो वाटर को वो रेनी सीजन में एक अलग से चैनल बन जाता है पानी का, जो वो किसी बेसिन से होता हुआ एक कैचमेंट एरिया में इकट्ठा होता है. ठीक है, बट अदर सीजन में रादर देन रेनी सीजन वो क्या होता है? ड्राई हो जाता है. ठीक है, वो ephemeral रिवर के कैटेगरी में आता है. सो ऑलवेज रिमेंबर द पेरिनियल रिवर एंड द ephemeral and their differences. Okay, that is a very important to understand the watershed management. Okay, so now I said with that water or flow into that river or nala or any other channel, you call it as a drainage. ठीक है, and when you have a network of rivers such flowing in, we can call it as a drainage system. Okay, so क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज? जब जो रिवर है, ठीक है, या किसी भी रिवर बेसिन से पानी जो है, वाटर जो है फ्लो होके आता है किसी नाला के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू या किसी रिवर के थ्रू, ठीक है, किसी कॉमन पॉइंट पे वो आता है, दैट विड बी अ ड्रेनेज, वी कैन से. इन वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट में कॉमन पॉइंट होता है एक, जिसको हम ड्रेनेज भी कह सकते हैं, राइट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम, वी कैन से the network of rivers such flowing in some kind of river basin. ऐसा नेटवर्क जो क्या करता है? फ्लो होता है जहाँ से वाटर, उस नेटवर्क को हम ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं. ठीक है, so finally a drainage basin which covers all the area which is drained by rivers and distributary, it is the drainage basin. ठीक है, so now once you have one river, okay, so that is there and the other river basin, that is this side and this side, we can say this side and this side, right? This side one river and this side that particular river. Okay, so what we are trying to understand is the water divided.
that particular area, the water is separated between two river basins, we can say. Okay, so the water divided is a region between the two river that are flowing, we can say. ठीक है, जहाँ से पानी दो भागों में बढ़ जाता है, उस तरीके के जो सिस्टम होते हैं या उस तरीके के जो चैनल होते हैं, that would be a water divide. Okay, so basically the watershed is a combination of that particular term. What particular term? We have to understand the drainage. What is the drainage? We have to understand the drainage system. What is the drainage system? Then after, we have to understand the drainage basin. Okay, so what is the drainage basin? Which covers or the area which is drained by the river and the distributary. ठीक है, ऐसा एरिया जो क्या करता है, ड्रेन होता है, रिवर की तरह का एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से वो ड्रेन होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग कैनल्स में, अलग अलग चैनल में, वी कैन से दैट वुड बी अ ड्रेनेज बेसिन. ओके, सो watershed term is combined with that particular terms. What terms? The drainage system, the drainage basin, and the water divided. We have to need to understand what is that particular term. Okay, when we understand that these four terms, we have very easily understand the watershed management. Okay, so when we come to the theory point, what is the theory says? Okay, क्या कहता है हमारा theory? So when we the basic introduction of watershed management, we can say the all land everywhere is a part or some watershed. It is a land area that captures rainfall and conveys the overland flow and runoff to an outlet in the main flow channel. Right? Earlier I told you कि अलग अलग चैनल से आके किसी कॉमन फ्लो चैनल पे मिलने वाले आउटलेट सिस्टम को हम ड्रेनेज कह सकते हैं, या हम उस मैनेजमेंट को, उस होल मैनेजमेंट को वी वुड से द watershed management. That would be a very easy term to understand that particular image. Okay, so the term watershed strictly refers to the division separating one drainage basin from another. So the term watershed is defined as the land area from which rainwater drains to the common point, right? So in physical terms, a watershed refers to the area lying above a given drainage point. It may cover from less than 1 hectare to thousands of hectares. So it is depending upon the point of reference, right? किस तरीके के जगह से, किस एरिया से जो है हम ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, इट डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, बट बेसिकली वी कैन से it is covered the area less than 1 hectare to 1000 of hectare. ओके, छोटे एरिया से लेके बड़े ह्यूज एरिया पे हम ये मैनेजमेंट कर सकते हैं. ओके, बट दिस इज अ नेचुरल सिस्टम, वी हैव टू मैनेज दैट पर्टिकुलर सिस्टम एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द वाटरशेड मैनेजमेंट. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग. ओके, सो द वाटरशेड बाउंड्री कॉल्ड द ड्रेनेज डिवाइड. एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि ड्रेनेज डिवाइड क्या होता है, एक ऐसा बाउंड्री जिसको हम ड्रेनेज, जहाँ से अलग अलग रिवर जो है सेपरेट होता है, वी कैन से the water divide or drainage divide as well. Okay, then precipitation received on the opposite side of a drainage divided does not contribute to the runoff of the particular adjoining watershed. That is a very important to understand कि जो precipitation होता है, ठीक है, मतलब precipitation से मतलब क्या समझते हैं आप, रेनफॉल होता है. बेसिकली जो रेनफॉल होता है, जो वाटर होता है, वो रिसीव होता है ड्रेनेज के अपोजिट डायरेक्शन में, टूवर्ड द स्लोप, टूवर्ड्स द ग्रेविटी हम कह सकते हैं. ठीक है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली ही वो एक कैचमेंट एरिया में हम कह सकते हैं इकट्ठा होता है, पानी कलेक्ट होता है. ओके, और कंट्रीब्यूट होता है, जिससे हम क्या करते हैं, रन ऑफ को रोक सकते हैं. राइट, सो दैट इज द वाटरशेड. ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट, व्हाट इज द वाटरशेड मैनेजमेंट. ओके, हम क्या समझ रहे थे अभी, व्हाट इज द वाटरशेड and then what is the watershed management. So watershed management, that particular, you can see the image here, that is a watershed boundary. As I earlier told you, that is a watershed boundary and that particular channel is a drainage channel. यहाँ से आपका common point drainage channel हो रहा है, then that is a common outlet जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, common outlet, right?
सो ये इमेज से आप समझ सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट को. सो वाटरशेड मैनेजमेंट may be defined as the process of formulating and carrying out a course of action involving manipulation of natural, agricultural and human resources of a watershed to provide resources that are desired by and suitable to watershed community. Okay, so basically the watershed management is an integration of technologies within the natural boundaries of the drainage area for optimum development of the land, water and plant resources to meet the basic needs people in sustained manners. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटरशेड मैनेजमेंट एक नेचुरल है. ठीक है, नेचुरल मतलब नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है जो अलग अलग चैनल से, इट कुड बी अ रिवर, इट कुड बी अ चैनल, इट कुड बी अ नाला. ओके, इट डिपेंड्स ऑन दी अलग अलग चैनल से जब पानी आता है, वाटर फ्लो होके आता है और किसी एक ह्यूज एरिया में वो क्या होता है, कलेक्ट होता है. और जब हम उसको अकॉर्डिंग टू दी रीजन हम बाउंड्रीज डेवलप करते हैं. ठीक है, फॉर दी प्रिवेंटिंग रन ऑफ मेजर्स. रन ऑफ मेजर्स के जरिए अगर हम उस वाटर को किसी पर्टिकुलर एरिया पे कलेक्ट करते हैं, दैट पर्टिकुलर मैनेजमेंट वी वुड से द वाटरशेड मैनेजमेंट. ओके, तो ये किस लिए होता है, वाटर रिसोर्सेज, प्लांट रिसोर्सेज के लिए होता है. बेसिक नीड्स होते हैं पीपल के फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, कुकिंग पर्पस, बाथिंग पर्पस, इंडस्ट्रीज. ओके, सो दीज आर द basic need for that particular, we have to need that particular management. Okay, which is watershed management. That is a very important in our current scenario, क्योंकि वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है. तो वी हैव टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज़ what watershed management, water harvesting. These are the very important very important process we can say to to prevent runoff water, to prevent soil and water erosion we can say. Okay, so let us move the नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ वाई वी नीड टू वाटरशेड. क्यों हमें वाटरशेड की जरूरत पड़ी, किस लिए हमने वाटरशेड मैनेजमेंट किया. राइट, सो सिंस वाटरशेड इज अ हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी, natural resources management and their utilizations are the best attempt by the taking it as a unit of development planning. So proper rainwater management, conserving runoff, control and development of the water resources is essential for meeting water demands of domestic, drinking, irrigation, industrial need. It is possible to it. ठीक है, ये हमारे बेसिक नीड के लिए and at the same time for preventing water erosion, for preventing soil erosion, we have to do that process which is watershed management. Right, so the management on watershed basis is now accepted as an essential features for full and integrated development of any area. Okay, so hence a watershed approach is needed for overall sustainable development. ठीक है, सो दैट वाटरशेड अप्रोच हम क्यों करते हैं, क्यों हमें आवश्यक है, क्यों हमें इसकी नीड है फॉर द सस्टेन डेवलपमेंट. ठीक है, सस्टेन डेवलपमेंट में हर चीज़ आ जाता है. आपका बेसिक नीड है, जो पीपल का बेसिक नीड है, एनिमल्स का है, इंडस्ट्री का है, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. ओके, फॉर द प्रिवेंटिंग रन ऑफ एंड कंजर्वेशन ऑल्सो. ओके, सो इस वजह से हमें क्या हुआ, वाटरशेड को मैनेज करने की आवश्यकता हुई, ज़रूरत पड़ी वी कैन से. ओके, so moving on the next slide, which is the concept of watershed management. This is a very important to know what is the concept of management, what concept the water management runs out. ठीक है, किस कंसेप्ट में वाटर मैनेजमेंट जो है वो चलता है. ओके, सो बिफोर अंडरस्टैंड द वाटरशेड मैनेजमेंट कंसेप्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट watershed management constantly undergoes the action and reaction of many hydrologic and hydraulic components or phenomena. Okay, so hydrology and the hydraulic component, that means when we talk about the hydrology, that would be a precipitation, infiltration, evaporation and evapotranspiration. That is the hydrologic entity. Okay, and when we talk about the hydraulic components, so what is the hydraulic components or what is the hydraulic phenomena? When we talk about the hydraulic phenomena, we have to know about the flood,
erosion, landslide, water scarcity, water quality degradation. These are the hydraulic components we can say. ठीक है. So these concept the watershed managements are run. Okay. इस कंसेप्ट पे रन करता है. किस कंसेप्ट पे? बिकॉज वाटरशेड किस कंसेप्ट पे रन करता है? हाइड्रोलॉजी एंड द हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स फिनोमेना. ठीक है, इस पे रन करता है. तो हाइड्रोलॉजी की जब हम बात करेंगे, दैट कुड बी अ प्रेसिपिटेशन, दैट कुड बी अ इनफिल्ट्रेशन, दैट कुड बी अ evapotranspiration, दैट कुड बी अ evaporation, right? When we talk about the hydraulic components, we can say the flood, erosion, landslide, water scarcity, water quality degradation. These are the hydraulic components. So these components are very essential to run the watershed management system properly. Okay, so these are the theoretical watershed management concept. Like the watershed includes all natural resources, which is the water, soil and vegetation, people, farming system, livestock, and the interaction among the components. Component, that means flood and erosion also. Okay, then all land everywhere is a part of some watershed. Watershed vary greatly in size, and it could be only few hectare as drainage area for filling small ponds, or 100 of square kilometers for rivers, a small watershed together from large watershed. So that would be a management system. स्मॉल पॉइंट से लेके ह्यूज एरिया का वाटरशेड, वहाँ पे कलेक्टिवली हम वाटरशेड को कैसे मैनेज करते हैं, स्मॉल वाटरशेड को हमने कैसे मैनेज करना है. ठीक है, इस कंसेप्ट पे रन करता है. ठीक है, इसके साथ साथ वाटरशेड में नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड है, जिसमें वेजिटेशन हो गया आपका. ठीक है, पीपल को क्या बेसिक उनकी नीड है जो फार्मिंग सिस्टम में चला रही है. इट इज़ रिलेटेड टू द कल्टिवेशन, क्रॉप कल्टिवेशन वी कैन सी. इन फार्मिंग सिस्टम एवरी enterprises are included, like the animal husbandry, fishery, and honey bee keeping, and the milking, etc. Okay, so soil, vegetation and water are the most important vital natural resources for the extents of the man and his animals. So these three interdependent resources can be managed collectively, consequently, simultaneously, and efficiently on watershed basis. Unit of the management, that is the concept of watershed management. But in this management, in this concept, we have to understand the hydrology and hydraulic component. This is a very important component to understand watershed management concept properly. Okay, so always remember the hydrology. In hydrology, precipitation, infiltration, evaporation and evapotranspiration. Okay, so I hope you all are familiar about that particular words. Okay, because in our earlier lectures we had already discussed in detail what is the precipitation, what is the infiltration, evapotranspiration and evaporation as well. Okay, so let us move in next slide, which is the size of watershed management. Okay, so sometime question has been asked in our competitive exams, like what is the size of management, and this particular size is which comes from the which category, something like that. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में, तो हमें ये पता होना चाहिए. वी हैव टू नो दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो लेट अस सी वेरी ब्रीफली. This is the macro catchment area we can say, or macro delineations we can say. Okay, so we have three columns. Like first column is the range, size range, and the second is the category of hydraulic units, and the second is the size range, which size is required for that particular hydrological units. Okay, so we have 5 categories for macro delineation. Okay, regions, basin, catchments, sub-catchments and watershed. Okay, when we talk about the regions, we have to need 270 to 1130 lakh per hectare range area. That is a area range, na? Okay, when we talk about the basin, that would be a 30 to 300 lakh hectare. Okay, then the catchment, when we talk about the catchment, that would be a 10 to 15 lakh of hectare. That would then when we talk about the sub catchment, that would be a 2 to 10, and then after watershed, that would be a 0.2 to 1.5 lakh per hectare. That would be a size range of that
कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलॉजिकल बॉडी, वाटर बॉडी वी कैन से, ठीक है। अगर हम रीजन या छोटे छोटे बेसिन की बात करें तो उनका किस तरीके से हेक्टेयर एरिया हो सकता है, या हम कैचमेंट, एक बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ कैचमेंट की बात करें तो वो बहुत ही बड़ा ह्यूज एरिया होगा, ठीक है। रीज़न इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इतना ह्यूज एरिया रिक्वायर्ड है क्योंकि वो अलग अलग एरिया से स्टार्ट हो रहा है, और उनका इनिशियल पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक अगर हम उनका एरिया मेजर करें दैट वुड बी अ वेरी ह्यूज एरिया, राइट। लेट अस मूव इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सेन माइक्रो कैचमेंट्स एरिया का ये हमारे पास कॉलम है। सो इन माइक्रो कैचमेंट्स एरिया वी हैव द 5 कैटेगरी ऑल्सो। So macro catchment, sub watershed, milli watershed, micro watershed and mini watershed. Okay, so हमेशा एग्जाम में फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रेंज बता देगा या आपको पूछेगा कि माइक्रो वाटरशेड का साइज रेंज कितना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रिमेंबर दिस। Okay, so in macro watershed area more than 5,000 hectare size range are required, but in sub watershed area 10,000 to 50,000 hectare. Then when we talk about the milli watershed, that is a 1,000 to 10,000 hectare. Then the micro watershed would be 100 to 1,000 hectare, and the mini watershed would be 1 to 100 hectare. Okay, so these are the size of watershed management, these are the catchment, these are the साइज ऑफ या साइज या रेंज हम कह सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट का, ठीक है। सो ये एग्जांपल अगर आप अपने एग्ज़ाम में ऐड करते हैं किसी सिस्टम को समझाने के लिए, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट हमारा क्या है वाटरशेड मैनेजमेंट का, और बेसिक हमें क्यों ज़रूरत पड़ी वाटरशेड मैनेजमेंट की, राइट, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटरशेड मैनेजमेंट एंड द वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ओके, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी हैव सीन like the principle and objectives of watershed management. Okay, so आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।